All right, so we are going to talk about chalazion today. Very interesting name, right? It is also called tarsal cyst and it is also called meibomian cyst. Okay, so first let's look at what is the tarsal here. What is the significance of the name tarsal and what is the significance of the meibomian name? Okay, so let's look at the eyelid here. So we have a beautiful eyelid here. Here we have eyeball, right? Here we have eyelashes. Then here we have a plate, and that plate supports the eyelid. That plate supports the eyelid, and that plate is called tarsal plate. Okay, so this plate is called a tarsal plate, TP. Okay, now here in the tarsal plate we have a structure, we have a gland here, and that gland is called meibomian gland. So Mg stands for meibomian gland. So in the tarsal plate we have this meibomian gland. Okay, and here in the eyelid we have glands of Zeus. So I'm writing Z, G and Z. So glands of Zeus. Okay, and also we have some sweat glands here, somewhere here. So this is a tarsal plate and this is meibomian gland. Now what happens? So first we will go to the PPT and we will actually look what is this pathology, what is this chalazion. But for now you need to know about these structures. अभी के लिए आपको ये मेबोमियन ग्लैंड क्या है ये याद रखना है, टार्सल प्लेट क्या है ये याद रखना है. Okay, so this is a tarsal plate as I have shown you, and this is a meibomian gland, and of course this is the anterior side and this is a posterior side. So हम ऐसे side view है and this side is anterior and back side is posterior. So meibomian gland is more of a posterior side, more of an internal side I would say, right? Okay, so let's look at what is chalazion now. So it is a chronic inflammatory granuloma of the meibomian gland. So first of all we need to know that it is a granuloma. So it is a tumor. That's why the word used here is a cyst. So it is a cystic tumor, right? And it is a granuloma of the meibomian gland. That gland we have seen just now, just few seconds back. तो हमने जो ग्लैंड के बारे में बात की उसी ग्लैंड के अंदर एक ग्रेन्यूलोमा का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट माय फ्रेंड्स वी कॉल चैलेजियन. ओके, सो जो वो सिस्टिक ट्यूमर होती है, जो ग्रेन्यूलोमा फॉर्मेशन होता है, नॉट एक्चुअली अ ट्यूमर ऑल्सो, इट इज अ ग्रेन्यूलोमा. ग्रेन्यूलोमा इज अ लिटल डिफरेंट, राइट? You have heard this term in the tuberculosis, granuloma. So it is a chronic inflammatory granuloma, and here we have written inflammatory because it is not actually a inflammation, ongoing inflammation, but it is a post-inflammatory thing. It is a post-inflammatory pathology. Okay, now what actually happens? So we have seen that gland, okay, and that gland of course have a duct because that gland secretes a meibomian secretion, that is a sticky material which what we can say, which lubricates the front portion of the eye, which lubricates the cornea. Okay, so that's why that secretion is needed, and there is a duct. So first what happens? So our notorious, let's look at into the paint right now. Okay, so here we had this eyelid, right? Here we had this tarsal plate, and here of course we had this gland, meibomian gland. Now here is a duct, meibomian gland's duct, meibomian duct. Now what happens? So
staphylococcus, this notorious staphylococcus comes and then it goes into this duct, right? So there is an entry of staphylococcus in this duct. Let me make it a little more clear. So suppose this is a meibomian gland's duct. So staphylococcus enters into this duct. Now as staphylococcus enters, our WBC will also follow it because it wants to kill the staphylococcus. Staphylococcus is not good for our body. तो हमारे प्यारे WBC जाएंगे उसको मारने के लिए. तो पहले स्टेफाइलोकोकस डक्ट में जाएगा एंड देन लेट मी मेक इट विथ अ डिफरेंट कलर. सो एंड देन WBC भी जाएंगे अंदर. So first entry of staphylococcus, then the entry of WBC, and then there is going to be inflammation. There is going to be war. Okay. So now with the inflammation, there is a lot of destruction also, because there is going to be secretion of a lot of agents. You know about inflammation. If you know about basic inflammation, you know that there is a lot of secretion going on, a lot of war going on. So with that, there is a destruction, and this inflammation goes on, and then it takes a chronic stage. So then there is a chronic stage, and क्या होता है कि यहाँ पे जो पूरी वॉर चल रही है उसकी वजह से जो क्रोनिक स्टेज में चला जाता है ये इन्फ्लामेशन, उसकी वजह से देयर इज़ अ ब्लॉकेज हियर. सो विद द बैक्टीरिया, विद द पस and with the ongoing inflammation, here is the blockage. So here is the blockage. यहाँ पे पूरी डक्ट ब्लॉक हो चुकी है. इट्स लाइक कोई टनल हो और उसके आगे का दरवाज़ा ही बंद कर दो. सो क्या होगा, अब यहाँ पे जो मेबोमियन ग्लैंड है, ऊपर यहाँ पे मेबोमियन ग्लैंड है, नाउ जो सारा सिक्रीशन होगा, यहाँ से सिक्रीशन आएगा, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा बिकॉज देयर इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन. सो अब क्या होगा कि जो पूरा मेबोमियन ग्लैंड का सिक्रीशन है वो अंदर जमा होता जाएगा, राइट. सो विद द इन्फ्लामेशन, ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन, अब ये क्रोनिक स्टेज हो चुका है एंड इन्फ्लामेशन अब ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, बट देयर इज़ अ ब्लॉकेज. सो ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लामेशन, साइड इफेक्ट ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन, देयर इज़ अ ब्लॉकेज. तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन ने अच्छा काम नहीं किया है, यहाँ पे ब्लॉकेज कर दिया है. तो सिक्रीशन पूरा जमा होता जाएगा, right, and with the inflammation, chronic inflammation, there is a formation of cystic granuloma, and that granuloma we call chalazion. Okay, so this is a pathology. First there is an entry of the staphylococcus, then there is an inflammatory reaction. It takes a chronic stage, and due to that the duct is blocked. So secretion जो पूरा हो रहा है वो accumulate होता जाएगा, जमा होता जाएगा, and with the inflammatory cells it is going to make granuloma. So सिर्फ secretion ही नहीं, inflammatory cells plus secretion makes granuloma. So there is a granuloma formation, and that is what we call chalazion. So that's why chalazion की अगर हम consistency देखें histologically, तो उसके अंदर क्या होगा, तो sebaceous material होगा और उसके साइड में जाइंट सेल्स होंगे, एपिथेलॉइड सेल्स होंगे और लिम्फोसाइट्स होंगे. एपिथेलॉइड सेल्स ट्यूबरकुलोसिस में भी आएंगे, जाइंट सेल्स. सो दीज आर द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स. अक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स में क्या होंगे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होंगे, राइट, न्यूट्रोफिल्स जिनको हम बोलते हैं. बट इट इज़ अ नॉट अक्यूट इन्फ्लामेशन, इट इज़ क्रोनिक इन्फ्लामेशन. एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर लिम्फोसाइट्स आते हैं, नॉट polymorphonuclear leukocytes. So that's why we have giant cell, we have lymphocytes, and we also have that secretion, and this all combined makes a chalazion. अब साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक इन्फ्लामेशन नहीं है. सो दिस इज नॉट अ इन्फ्लामेशन. लेट्स फोकस हियर, just focus here. So this is not a inflammation, remember, this is a post inflammatory stage, and if there is a inflammation, it is not a severe, it is of mild quality. So यहाँ पे chronic inflammation के बाद का ये stage है, तो यहाँ पे कोई inflammation चल नहीं रहा है,
सो देर इज़ नॉट गोइंग टू बी पेन और टेंडरनेस. पेन हो सकता है, पर पेन, ये जो ट्यूमर है वो आसपास के स्ट्रक्चर को, नर्व को सप्रेस करेगा, दबाएगा, प्रेशर करेगा, तब पेन होगा. एंड दैट पेन इज़ नॉट सीवियर. सो यहाँ पे ऑन गोइंग इन्फ्लामेशन जैसा पेन नहीं होगा. यहाँ पे ऑन गोइंग इन्फ्लामेशन जैसी हीट नहीं होगी, इडीमा नहीं होगा. यहाँ पे ट्यूमर है, उसकी वजह से स्वेलिंग है. इन्फ्लामेशन का इडीमा नहीं है यहाँ पे, राइट. सो इट इज़ नॉट इन्फ्लामेशन, पोस्ट इन्फ्लामेटरी स्टेज. बट देर इज गोइंग टू बी हैवीनेस ड्यू टू द ट्यूमर. देर इज अ फीलिंग ऑफ हैवीनेस. ओके. एंड अगर ये जो ट्यूमर होती है वो बर्स्ट कर देती है, खुल जाती है, देन वी माइट हैव अ सिक्रीशन, pus and all that secretion. Okay, so that's why in sign and symptoms you have to remember there is not going to be marked pain, or there is not going to be marked tenderness, because it is not an ongoing inflammation like STI. And this is the main differentiating point. STI होती है वो inflammation होता है, acute inflammation STI के अंदर. So that's why we see so many stinging type of pain and tenderness and redness, but here we do not see. And ये जो structure होता है वो inside होता है, और STI होती है वो superficial होती है, external होती है, right? So let's come back. So there is a heaviness and irritation, cystic hard swelling like a size of pea, and multiple chalasia can also be there, and that will produce multiple swellings. Swelling is fixed to the tarsal plate, okay, and there is no sign of inflammation. And if you evert the lid, you might see velvety red or purple conjunctiva due to that pressure. Okay, now course. So क्या हो सकता है? एक तो रिजोल्यूशन हो सकता है उसका, एक तो जैसा है वैसा रह सकता है, एक तो थोड़ा और बढ़ सकता है. देन क्या हो सकता है? सो बस्ट, इट कैन बी बस्ट, जैसा कि मैंने बताया. इट कैन प्रोट्रूड थ्रू दैट डक्ट. सो इट कैन बस्ट, इट कैन रिजोल्यूट, it can protrude, it can go bigger, and it can also form secondary infection which is called internal hordeolum. Calcification can also be there if the tumor is so much chronic, right? And very rarely meibomian carcinoma can also occur if you are having very recurrence chalazion formation. Then there might be a carcinoma due to continuous irritation. Okay, now treatment. So it is a tumor, it is a granuloma, so there is going to be surgical treatment. You have to take it out. But first, before going for the surgical treatment, you expect a resolution. So you try conservative treatment to expect a resolution. Try करके देखना है हमको कि resolution हो जाता है कि नहीं. And still if resolution doesn't occur, or the chalazion is so much big, then you need to surgically cut it. So incision, first you give antibiotic treatment, right, and expect a resolution. And if the resolution doesn't occur, then you incise the tarsal conjunctiva vertically. Okay, so that's it. Thank you so much, and make sure to like my video and share it with your fellow medical student. Sharing is caring. Okay, तो जितना शेयर करेंगे लोगों के साथ उतना उनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है. एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियो में क्या कमी है, और इफ़ यू वांट टू सजेस्ट मी एनी वीडियो, आगे के टॉपिक के बारे में कुछ सजेशन दे सकते हैं. ओके, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल so that I can make more videos and I can continue this work. Thank you so much once again.